Good evening, friends. And I'm coming back after 3rd September. 3rd September, I had posted a video on the market direction, what will happen. So, since that, whatever I said has come true, जो मैंने बोला था वैसे ही हुआ मार्केट में. 3rd September को सेल सिग्नल आ गया था. I told you this is the sell signal. इसको सेल कर दो. My target was basically 22,000, but the market came down to 20. I'm talking about Bank Nifty. My target was 22,000. Then I said 21,000. It came down to 20,800. और वहाँ से पिछले 2 दिन से बाउंस बैक आया है. So it bounced back on Thursday and Monday. Friday and Monday. Thursday was severe selling, excessive selling, क्योंकि एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था. तो क्या होता है मंथली एक्सपायरी में, जब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आ जाता है मार्केट को तो वो एक्सेसिव हो जाता है. जैसे कि बाय डायरेक्शन आ गया मंथली एक्सपायरी के दिन या कोई भी वीकली एक्सपायरी के दिन स्ट्रॉन्ग बाय साइड आ गया तो वो और ज्यादा बाय हो जाता है, क्योंकि देर आर options who have option sellers who have sold options, there are future sellers who have sold or bought futures. तो वो प्रेशर्स के कारण, एक्सपायरी प्रेशर्स के कारण वो एक्सेसिव हो जाता है. तो पिछले 2 दिन में क्यों बाउंस बैक आया? सो व्हाई वाज देयर अ बाउंस बैक ऑन फ्राइडे एंड मंडे? So for example, I'll take a rubber band. You pull it excessively, it is going to come fast back again, and then it will come back to its original position. So वही हो रहा है मार्केट में. There was excessive selling on Thursday, and that excessive, like a rubber band, market was pulled down, and then there was 2 days bounce back, and again now from today it will normalize. तो आज से मुझे लगा कि डायरेक्शन शुरू हो जाएगा सेलिंग की तरफ, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है शायद, क्योंकि आज भी ऊपर नीचे बहुत हुआ. मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था, नहीं कमाया ज़्यादा. आज बोल रहा हूँ मैं. वैसे 3rd September से आई हैव अर्न समवेयर अराउंड 8 lakh प्लस. So that is including mine and my investors. So it's combined 8-9 lakhs I have earned. And then today a little over some 1 lakh I earned today. So now what will happen next is I feel market will go sideways. So 3 trend होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड sideways. I'll show it in the graph live. I'll show. Then you can understand it very clearly. और ये sideways ट्रेंड आ सकता है ये एटलीस्ट अगले 2 से 3 दिन के लिए, एंड इस टाइम पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है. तो क्या होता है, सडनली डाउन आता है लाइन एंड यू फील इट इज सेलिंग, इट गोज बैक अप अगेन एंड इट गोज अप सडनली, यू फील देयर इज गोइंग टू बी बाइंग एंड इट कम्स डाउन. सो 99% ट्रेडर्स ये साइडवेज के दिनों में ही लॉसेस करते हैं. Who earns in these sideways days are option sellers. So my main business is option selling, option writing. So option sellers, what they do is when it goes up, they sell call option. They earn all the premium. They eat all the premium of the options. If it comes down suddenly, they sell put option. Market goes back up again. So the put option price goes away and they eat the premium option sellers. So ऑप्शन सेलर्स ये साइडवेज दिनों में बहुत अच्छा कमाते हैं. और ये एक्सपायरी के आसपास जब ये साइडवेज ट्रेंड आता है तब तो ऑप्शन सेलर्स की तो चांदी ही चांदी होती है. सो थर्सडे इज वीकली एक्सपायरी, सो दिस स्पाइकी मार्केट माइट कंटिन्यू फॉर 2 days at least, what I feel. But there is another factor, that is global markets. Dow Jones, Nasdaq, S&P, they can give a new direction to us, but they also seem to be having a sideways move only. And that's why I feel 2-3 days who are taking naked position, जैसे कि पूरा कॉल ऑप्शन बाय कर लिया या पूरा पुट ऑप्शन बाय कर लिया या फ्यूचर्स ले लिया, उनको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए. क्या होता है कि यू टेक एनी टाइम फ्रेम, 1 month ले लो, 1 year ले लो, 5 साल ले लो, 99% traders go away. Their accounts are wiped out because they don't understand the trends. You should know the trend, and in that trend what you should do, and I'll make a separate video, why 99% traders lose money and why trading is considered to be a very dangerous business. I'll make a video on that too.
बट अंडरस्टैंड दिस, वन ऑफ द फैक्टर इज अ साइडवेज ट्रेंड मार्केट. साइडवेज के मार्केट में कुछ नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं, एंड दैट इज व्हेन ट्रेडर्स लूज मनी. सो that is what I thought. I'll make a video and I'll show what can happen and what not to do. See, anything you take up, any business, any skill or any job, what you do, everyone knows what to do. क्या करना है सबको पता है, but nobody knows what not to do, or very few know what not to do, and those people only succeed. Same is in trading. 99% of things you should know what not to do. What you have to do, many people tell you. There are many trainers also who are charging 50 and 60,000 for training, and they only tell you how to read the chart, how to do this. They all give you theoretical knowledge, but कोई भी आपको ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है, और वही सबसे important है. They don't teach you about psychology. They don't teach you about risk. They only teach you about reading charts, and that is the problem. I'll make a separate video on that, and now I'll show you the chart. I will record the chart setup also. I'll show you how historically also I'll show you what is a downtrend, what is an uptrend, and what is sideways. And that I would like to summarize that next few days might be a sideways market, and please avoid trading in that. And if there is a new direction अगर दिख रहा है मुझे, कुछ नया ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं अपने फिनवर ग्रुप में शेयर करता हूँ कि ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ. मैं ये वीडियो हो या फिर फिनवर ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर मैं आपको क्या ट्रेड करना है ये मैं नहीं बता रहा हूँ. मैं अपना जो ट्रेड है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, so that you might learn something. And this is completely free what I'm doing. I don't have to do it also. I do my trade comfortably and I earn money with that. And my investors also who are connected with me, they earn money with that. But I'm doing this because I see बहुत सारे trainers आ गए market में, बहुत सारे जो calls देते हैं लोग वो आ चुके हैं market में. They charge you a lot of money, and 99% of the time things they don't tell you. So that is the problem. What I see today is that the industry is facing with a lack of quality, and that is what I want to address.